Can you hear me? Yes. Good evening. Yes. Good evening, Good everyone. evening. A Good warm- evening. Good evening. Good evening. A warm welcome to you all. Today we have with us Sri Rahul Dev, a bilingual journalist and a language activist who has worked both in print and TV, Hindi and English news media. He started his career with the Pioneer in Lucknow and worked for The Week, the Illustrated Weekly of India and Probe India, before switching to Hindi journalism with the Maya magazine. He had been editor of Hindi dailies Jan Satta and Aaj Samaj, television news head of Aaj Tak, advisor of Zee News, editor-in-chief CNEB News Channel, and prime-time anchor of DD News. He works on developmental, public health, and media issues with national and multilateral organizations and is the managing trustee of Samayak Foundation since 1990. His prime focus for several years now is the preservation, promotion, and growth of all Indian languages, which are facing a mortal threat from English. Welcome, Rahulji, to this program. Thank you, Sushmita. Thank I you. hope my voice is clear. Absolutely. Thank you for that unnecessary but nevertheless important introduction. Friends, I'll not take much of your time. For the benefit of those who are not so good at Hindi, who are not aware with the Hindi literature, I'll say a few words about Harivansh Rai Bachchan, who wrote Madhushala, which I'm going to recite based on the tune, based on how it was sung by famous singer Manna Dey. We all know Manna Dey. Harivansh Rai Bachchan, Dr. Harivansh Rai Bachchan was born in 1907 on 27th November, and he died at the ripe age of 93 on 18 January 203 at Mumbai. He was born in Allahabad, which is in UP. He is one of the most well-known Hindi poets and writers of his time. He was born in what is called the post-Chayavad period of Hindi literature. And he has a very large oeuvre, as we say. He has, to his credit, 25 collections of poetry, 25 books on miscellaneous issues, biographies, commentaries, criticism, including a biography of Nehru, with whom he was a great friend. 6 translations from English, a 4-part biography, autobiography, which is which has a special place in Hindi literature for its unique style and narrative. And the total complete works of Harivansh Rai Bachchan run into 9 volumes. He was a Padma Bhushan, awarded in 1976 for literature. He also was awarded the Soviet Land Nehru Puraskar, which in those days were a very major, important global, for India, a global recognition. And he was a member of the Rajya Sabha from 1966 to 72. Madhushala is his most famous poem. It made him a superstar of Hindi literature when it first came out, in I guess 1937 or so. And he became an immediate, a huge sensation when he used to sing Madhushala on stage. And you are all aware of the Kavishala Parampara, the Kavishala tradition of Hindi, Kavi Sammelans. So in the Hindi Kavi Sammelans,
thousands of people gathered to listen Bachchan recite his Madhushala in his mellifluous voice. Madhushala is a long poem, and I'm going to sing what the selection. It has been done by Manna Dey, and the one who produced this LP. 20 stanzas of a very long poem, which runs into several hundred stanzas. Madhushala, as you know, means the pub, the bar. So this poem is about Madhushala, Saki, and Sura, Madira, alcohol, wine. But it is a metaphor for life itself. There is romance in it. There is a deep philosophy of life. There is pathos. There is wisdom. And there is great masti also, as suits a poem on Madhushala. And as you listen to these stanzas, you realize that it begins with the exuberance of love and intoxication of love, love of life, love of a beloved. The love matures, settles down, and then begins the latter part of life or any relationship, whether our relationship with life or with a person, when the graver concerns of life start taking over, when the first blush of love, as we know in youth, starts to mellow down and loosen its grip on one's soul. And then later, as one grows in years, one faces the other realities, the slipping faculties, the slipping intoxication of life, the pleasures and joys of life, and one faces the ultimate, call it destination or stage in life, death. And as one gets close to death and one faces death, so the poet takes us through all these phases of life in a very metaphorical way. So we experience joy, great joy and pleasure and masti, happiness. We also experience sadness, pathos, the tragedy of life, tragedy of love, leading up to our last destination, death. So I'll begin now, and I must confess I have just had an eye operation 4 or 5 days ago, and I have not had time to really rehearse this because it's not an easy poem to sing. So please excuse me. I'm going to flounder towards the end of the poem, but please, I hope I'll receive your indulgence. So here it goes. Madhushala by Dr. Harivansh Rai Bachchan. The first stanza was sung by Bachchanji himself. But I forgot to mention, he also has a little, another important introduction. He happens to be the father of someone called Amitabh Bachchan. So, and if you have heard Amitabh Bachchan, when he speaks about his father, it's a joy to hear him speak about his father, the love and reverence and deep respect with which he speaks of his father, recites his poems, is a tribute to the kind of father Dr. Bachchan was, and also to his son, Amitabh. The first stanza was sung originally by Dr. Bachchan, and then from second onwards, it was Manna Dey. So you are going to hear a very, very bad version of Manna Dey's singing.
मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, आ जाएगा मधुशाला, राह पकड़ तू एक चला चल, आ जाइएगा मधुशाला, सुन कल कल छल छल मधुघट से गिरती प्यालों में हाला, सुन कल कल छल छल मधुघट से गिरती प्यालों में हाला, सुन रुंझुन चल वितरण करती मधुसा की बाला, बस आ पहुँचे दूर नहीं, बस आ पहुँचे दूर नहीं, कुछ चार कदम अब चलना है, चहक रहे सुन पीने वाले, महक रही ले मधुशाला, चहक रहे सुन पीने वाले, महक रही ले मधुशाला, लाल सुरा की धार लपट सी, कहना कहना इसे देना प्याला ज्वाला, सॉरी, लाल सुरा की धार लपट सी, कहना इसे देना ज्वाला, फेनिल मदिरा है मत इसको कह देना फूल का छाला, दर्द नशा है इस मदिरा का, दर्द नशा है इस मदिरा का, विगत स्मृतियां साकी हैं, पीड़ा में आनंद जिसे हो, आए मेरी मधुशाला, पीड़ा में आनंद जिसे हो, आए मेरी मधुशाला. This is interesting, the next one. धर्म ग्रंथ सब जला चुकी हो, धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है, जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मत वाला, पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला, लालायित अधरों से जिसने हाय नहीं चूमी हाला, हर्ष विकंपित कर से जिसने हा न छुआ मधु का प्याला, हाथ पकड़
लज्जित साकी का हाथ पकड़, लज्जित साकी का पास नहीं जिसने खींचा, पाप नहीं जिसने खींचा, व्यर्थ सुखा डाली जीवन की उसने मधुमय मधुशाला, व्यर्थ सुखा डाली जीवन की उसने मधुमय मधुशाला। बने पुजारी प्रेमी साकी, गंगा जल पावन हाला, रहे फेरता अविरत गति से मधु के प्यालों की माला, और दिए जा और पिए जा, और दिए जा और पिए जा, इसी मंत्र का जाप करे। मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं, मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं, मंदिर हो ये मधुशाला, मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं, मंदिर हो ये मधुशाला। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बार ही सजती बाजी, जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन मदिरालय में देखो, मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला, दिन को होली रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। अधरों पर हो कोई भी रस, जिह्वा पर लगती हाला, भाजन हो कोई हाथों में लगता रखा है प्याला, हर सूरत साकी की सूरत, हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती, जहाँ आँखों के आगे हो कुछ भी, आँखों में है मधुशाला, आँखों के आगे हो कुछ भी, आँखों में है मधुशाला। हो गया तुम्हारा बेटा? हो गया? नहीं है? Okay. शुरू करूं? Yes, yes. सुमुख तुम्हारा सुंदर मुख ही मुझको कंचन का प्याला, छलक रही है, छलक रही है, छलक रही है, जिसमें माणिक रूप मधुर मादक हाला, मैं ही साकी बनता, मैं ही पीने वाला बनता हूँ, पीने वाला बनता हूँ, जहाँ कहीं मिल बैठे हम तुम, वहीं गई हो मधुशाला,
जहाँ कहीं मिल बैठे हम तुम, वहीं गई हो मधुशाला. Now comes the mellowing of love and a little boredom that our beloved sometimes expresses or feels. दो दिन ही मधु मुझे पिलाकर ऊब उठी साकी बाला. दो दिन ही मधु मुझे पिलाकर ऊब उठी साकी बाला. भर कर अब खिसका देती है वह मेरे आगे प्याला. नाज अदा अंदाजों के अब हाय पिलाना दूर हुआ कर देती है. अब तो केवल फर्ज अदाई मधुशाला. अब तो कर देती है केवल फर्ज अदाई मधुशाला. ये हम सब के साथ होता है. 10 years after marriage. And now the decline and the realities of life. छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं पी लूं हाला. छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं पी लूं हाला. आने के ही साथ जगत में आने के ही साथ जगत में कहलाया जाने वाला. स्वागत के ही साथ विदा की. स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी बंद लगी होने. खुलते ही बंद लगी होने. खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला. मेरी जीवन मधुशाला. शांत सकी हो अब तक साकी. शांत सकी हो अब तक साकी. पीकर किस उर की ज्वाला और की रटन लगाता. और की रटन लगाता. पीने वाला. कितनी इच्छाएं हर जाने वाला छोड़ यहाँ जाता. कितने अरमानों की बनकर कब्र खड़ी है मधुशाला. कितने अरमानों की बनकर कब्र खड़ी है मधुशाला. Now the reality of death faces us. यम आएगा साकी बनकर साथ लिए काली हाला. यम आएगा साकी बनकर साथ लिए काली हाला. पी न होश में फिर आएगा सुधा विसुध यह मत वाला. यह अंतिम बेहोशी अंतिम
साकी अंतिम प्याला है। पथिक प्यार से पीना इसको, पथिक प्यार से पीना इसको, फिर ना मिलेगी मधुशाला, फिर ना मिलेगी मधुशाला। पथिक प्यार से पीना इसको, फिर ना मिलेगी मधुशाला। Madhushala as in life itself. गिरती जाती है दिन प्रतिदिन प्रणयिनी प्राणों की हाला, भग्न हुआ जाता दिन प्रतिदिन सुभगे मेरा तन प्याला रूठ रहा है, रूठ रहा है मुझसे रूपसी दिन दिन यौवन का साकी, सूख रही है दिन दिन सुंदरी, सूख रही है दिन दिन सुंदरी मेरी जीवन मधुशाला, मेरी जीवन मधुशाला। ढलक रही है तन के घट से संगिनी जब जीवन हाला, ढलक रही है तन के घट से संगिनी जब जीवन हाला, पात्र पात्र गरल का ले जब अंतिम साकी हो आने वाला, हाथ परस भूले प्याले का, हाथ परस भूले प्याले का स्वाद सुरा जिह्वा भूले, कानों में तुम कहती रहना, कानों में तुम कहती रहना, मधुकर्ण प्याला मधुशाला, कानों में तुम कहती रहना, मधुकर्ण प्याला मधुशाला, मधुकर्ण प्याला मधुशाला. Now he expresses how he wants to die and what he wants to be done after he's dead. मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला, मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल हाला, मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल हाला, प्याला मेरी जिह्वा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल हाला, मेरे शव के पीछे चलने वालों, मेरे शव के पीछे चलने वालों याद से रखना, राम नाम है सत्य न कहना, राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला, कहना सच्ची मधुशाला. मेरे शव पर वह रोए जो,
ओ जिसके आंसू में हाला, मेरे शव पर वह रोए हो, जिसके आंसू में हाला, आह भरे वो जो हो सुरभित, मदिरा पीकर मत वाला, दे मुझको वो कंधा जिनके, दे मुझको वो कंधा जिनके पगमद डगमग होते हों, और जलूं उस ठौर, और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला, और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला। और चिता पर जाए उड़ेला, पात्र न घृत का पर प्याला, कंठ बंधे अंगूर लता में, मध्य न जल हो पर हाला, प्राण प्रिय, प्राण प्रिय यदि साथ करो तुम मेरा, तो ऐसे करना, पीने वालों को बुलवा कर, पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मधुशाला, पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मधुशाला। नाम अगर पूछे कोई तो कहना, बस पीने वाला, काम ढालना और ढलाना, सबको मदिरा का प्याला, जाति प्रिय, जाति प्रिय पूछे यदि कोई कह देना, दीवानों की धर्म बताना, प्यालों की ले माला जपना मधुशाला, धर्म बताना, प्यालों की ले माला जपना मधुशाला। और ये अंतिम है, दिस इज लास्ट। These are his instructions to his son. पितृपक्ष में पुत्र उठाना, अर्घ्य न कर में पर प्याला, पितृपक्ष में पुत्र उठाना, अर्घ्य न कर में पर प्याला, बैठ कहीं पर जाना, गंगा सागर में भरकर हाला, किसी जगह की मिट्टी भीगे, किसी जगह की मिट्टी भीगे, तृप्ति मुझे मिल जाएगी, तर्पण अर्पण करना मुझको पढ़ पढ़ करके मधुशाला, तर्पण अर्पण करना मुझको पढ़ पढ़ करके मधुशाला, पढ़ पढ़ करके मधुशाला, तर्पण अर्पण करना मुझको पढ़ पढ़ करके मधुशाला।
Thank you. Thank you very much. बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा है। बहुत Very अच्छे, बहुत nice. अच्छे, आपने तो सच्ची रुला दिया। मजा आ गया। बहुत बढ़िया। बहुत Thank अच्छा। you, but I did flounder in Really, it is really आपको so सुन के बहुत मजा आ गया। एक्सेलेंट बहुत मजा आई, एक्सेलेंट, खूब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Thank you. Thank एक्सेलेंट you. वॉइस, very वो तो है, आपकी आवाज भी इतनी सुंदर है, इतनी डेप्थ है आपकी आवाज के अंदर की कमाल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Wonderful, wonderful, Thank you. wonderful. We rendition. we all- thorough- मधुशाला में पहुंचा दिया। Yes. we thoroughly enjoyed. We thoroughly enjoyed. Thank you, Rahul ji. यू लुक एग्जैक्टली लाइक अमिताभ बच्चन। Enjoyed it. Oh my God, oh my God. As if Amitabh Bachchan will reciting. I tell him sometimes that. I think I was enjoying the Madhushala. Thank you. आज रात को सब अपनी मधुशाला खोल लेना। आप साथ Only देंगे? that he will. आप साथ देंगे? जरूर। जो शशि, मैंने रात को अपनी अपनी मधुशाला खोल लेना। मैंने कहा आप बाकी साथ weekend है। अभी तो अभी हम मधुशाला Thank you very much, Rahul. Can I ji. have? And Can I how have? did you like my hair? Sir. Cut. Apart from these, he also wrote some stanzas in Madhushala, which he didn't publish. But they are very, very interesting. They did. And let me first tell you, he was a teetotaler. And this is what he has written. देखिए बेटा चला के एकदम। हाँ चलो बंद कर। Rahul ji, sorry for disturbing. I wanted to ask you the same. Yeah. Yes, please. Unmute कीजिए. Unmute yourself, please. Please, हाँ. Please unmute yourself. Yeah, Yes, sir, I speak. yes please. Sorry. I Sir. wanted to ask you the same thing that कि मधुशाला literal meaning तो नहीं है पोएम में, तो क्या उसका मतलब क्या है? Maybe I joined little late, so मैंने miss किया होगा. Oh, is that Sangeeta? Yes, yes. Oh, let me introduce Dr. Sangeeta Srivastav to you. She is the principal of a very, very, very big school in Mumbai, sorry, and a great singer and poetess herself. Please आप मेरा introduction मत बताइए. Please. आपने मेरे जो question पूछा है वो Please. I'm thankful that you joined. Madhushala, as I said earlier in the introduction, is a metaphor for life itself. Sometimes the Saki or the Madhushala is life, sometimes it's your beloved, sometimes it's joy. So it's a metaphor for the Anything. life in its entirety, in its totality, with all its ups and downs and all dimensions. So there is. So when he says that khulwa dena madhushala, what it actually means, like when? Well, I'll have to do. It needs another session. I'll have to call Dr. Bachchan on planchette and ask him. Straight away open the champagne. We can only guess and estimate and maybe imagine what he might have meant. But this is the you're a poetess yourself. You know the poetry is not to be taken literally. Yeah. It is always symbolic and figurative. Sometimes the symbolism is clear, sometimes it's not. And it's nearly impossible for anyone else to say for sure what the poet or poetess had in mind. Yeah. And things have to be taken in totality. Yes. Every poem In totality. is taken in totality. So Madhushala, Khulwadena Madhushala. Now, what I think is Madhushala here is the joy of life itself in its totality, apart from shorn of the constraints of organized religion. Mm-hmm. And to have this ability to enjoy life
to enjoy the intoxication of life, of living, of love. Yeah. So you invite everyone and ask them to enjoy life, enjoy love. That is what probably he meant by Khulwa Dena Madhushala. Yes, yes, I too absolutely. think. Thank yeah, you so much. Yeah. Thank that you is- so much. So I want to read these few stanzas to you, which have not been sung, and he didn't publish it in the main poem. Yeah, excuse me, as an extension of this thing, Yeah. could I ask you some small thing, some small clarification? Yes, Of course, please. I enjoyed your listening to this, but then this Madhushala, has it got anything to do with the intoxication, the alcohol and the things like that? Then only, whatever you were telling earlier, that he was a teetotaler, that applies only, that doesn't apply in case it is meaning that. In case it is meaning the depth of the life and all that, then he would have left, he would have, lived that life. And then only, he got the essence of the life, and he's put all those verses in this book. Is there does it make a sense what I'm telling? Sir, if I have understood you, let me try to answer based on what little I could understand. As I said earlier, poetry is never literal, Yeah. Right. never. Okay. Otherwise, it becomes prose. Okay. So poetry includes imagination, symbolism, figurative, lots of metaphors, similes, and meaning is sought to be drawn and injected into the poetry by using all these elements of literary work, Okay. literary skill. So when he was himself a teetotaler, then it stands to reason that his poetry about his poem about Madhushala, the bar, the barmaid, and the which is the sake and the wine, is meant for something else. It has a deeper meaning, and you could, if you had listened, he's after the first exuberance of love, when the face of your beloved is like wine itself. So you look at your beloved and you get intoxicated. From that intoxication of love to intoxication of life, to enjoying life, the joy of life, and then the sorrows of life. And you go through all these emotions in this poem. And then you face the realities of life, yet those realities also are not to make you sad and depressed. It is expected that you will enjoy those realities, that deeper part of life, when life is slowly ebbing, when you can see your limbs losing ability. Like he says, when my hands lose the touch of the cup or the goblet or the glass of wine. But then how does one enjoy? How does one still love? So in all circumstances, in all stages of life, love and life, they change shape and form, but what shall I say, the experience of life itself is the greatest intoxication, the greatest nasha. Rahulji, good morning. Anup Bhargav here. Anupji. Anupji. Sir, you may want to quote, he's asking about his personal experience with wine and liquor. So you may want to quote that, मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला. That is quite famous. That's what I've been wanting to recite now, Anupji.
let me, friends, introduce Anup Bhargav from New Jersey, US. He is himself a very, very excellent poet Okay, good. and a Hindi literature. And I believe Divya Mathur from UK is also here. So I had taken the liberty to invite a few friends Okay, who are themselves writers and poets. Mhm. So, before, friends, I would ask you to hold your horses and hold your questions and just listen to these few stanzas. Maybe, Yeah. I mean, this is the hilarious or the humorous part of this serious poem. Mhm. So he has written, here goes. स्वयं नहीं पीता औरों को किंतु पिला देता हाला, स्वयं नहीं छूता औरों को पर पकड़ा देता प्याला, पर उपदेश कुशल बहुतेरों से मैंने यह सीखा है, स्वयं नहीं जाता औरों को पहुंचा देता मधुशाला. अब इसके बाद this is a very interesting, those who are kayasts here, Yeah. just for them. There'll be hardly any guys without alcohol and without Yes. a bone. So, मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला, मेरे तन के लोहू में है 75% हाला. Wonderful. Very nice. मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला, मेरे तन के लोहू में है 75% हाला, पुश्तैनी अधिकार मुझे है मदिरालय के आंगन पर, मेरे दादों परदादों के हाथ बिकी थी मधुशाला. बात है, क्या बात है. संगीता इसका याद रखना. वही मैं कह रही हूँ. I can enjoy it. Rahul bhai, can I add one thing? जी निर्मला जी, एक और सुन लीजिए, आपको मजा आएगा. फिर बात करेंगे. ये एक दो और हैं, बहुत ही मजेदार. बिल्कुल. सजे न मस्जिद और नमाजी कहता है अल्लाह ताला, सजे न मस्जिद और नमाजी कहता है अल्लाह ताला. वहां पे साज सजावट माना है इस्लाम में. सज धज कर पर साकी आता बन ठन कर पीने वाला, सजे न मस्जिद और नमाजी कहता है अल्लाह ताला, सज धज कर पर साकी आता बन ठन कर पीने वाला, शेख कहाँ तुलना हो सकती मस्जिद की मदिरालय से, शेख कहाँ तुलना हो सकती मस्जिद की मदिरालय से, चिर विधवा है मस्जिद तेरी सदा सुहागन मधुशाला. वाह. Very beautiful. आज के माहौल में अगर कोई ये कह दे और लिख दे तो अभी इसको शायद मार दिया जाए. Yes, true. Yes, but yes. it is so beautiful. एक समय था ऐसा जब ये कविता लिखी जा सकती थी और कही जा सकती थी. Freedom of speech. Yes. बिल्कुल. This is Hades Sudan from Bombay, Mumbai. सुनिए आखिरी. अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए 1 मिनट. मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला. अब यहाँ आप हाला और मधुशाला प्याला को जिंदगी मान लीजिए. एक ही देश, एक समाज, एक ही जीवन, इंसानियत. एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, दोनों रहते एक न जब तक मस्जिद मंदिर में जाते, दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर मिलता मेल करा. मधुशाला. Beautiful. So okay, now I'm Rahul Can I add one thing?
Hades Sujan from Ye Bombay. Nirmala ji. Yeah, I will just like to say had one शेर कि कौन please. कहता है मैं नहीं पीता. देखिए इंसानों की जब आप प्यार में होते हैं ना तो कौन कहता है मैं नहीं पीता, कौन झूठी कसम उठाता है, मैं कदे से जो निकलता है वो तुम्हारी आंखों में डूब जाता क्या है. बात है, वाह. तो इंसान की वाह. आंखों में भी वाह. मधुशाला है, प्रकृति के कण कण में. और इसके अलावा एक चीज और जो मैंने पढ़ी थी राहुल भाई, वो ये कि जब आप आध्यात्मवाद में, जब आप स्पिरिचुअलिज्म में होते हैं, मान लो कोई नाचता है, कोई गाना गाता है, तो अध्यात्मवाद में वही आनंद का नशा होता है जो एक शराब में, मधुशाला में होता है. तो दैट इज वेरी नेसेसरी. वंस यू हैव आनंदा इज ए काइंड ऑफ मधुशाला. थैंक यू सो मच भैया. निर्मला जी, वो अध्यात्म का नशा ये इस शराब वाले से कहीं अलग है, उसकी तुलना नहीं कर सकती. वो ये उसके अंश भी नहीं है, उसके धूल भी नहीं है. तो ये तो कह रहे, तो हम ओनली पर्पस ऑफ ह्यूमन टू नो दैट आनंदा, जो मीरा ने पाया, जो दैट आनंदा. और आदमी इन चीजों में घूम रहा है मधुशाला में. जी बिल्कुल. हाँ, राइट, करेक्ट. मधुशाला में नहीं मिलेगा, टेम्परेरी है, फिर उतर जाएगा नशा, खत्म. अब देखिए, मधु तो हमारे साथ यहाँ पर भी है. मधु तो बहुत सारी, 2-3 मधु है. हाँ, मधु ठाकुर है. मधु हम सबके भीतर भी है, कस्तूरी भी हमारे भीतर है. जा रही हो, चलो 2 मिनट. Rahul ji, can I say something? Yes, sir. Please. I don't want to ask any question or something. I just want to appreciate that in spite of your eye surgery, you took this trouble of rendering it so beautifully the life-changing poem of Dr. Bachchan. Thank you, And sir. I would just like to say that, like Madhushala, India has given one more very, very, very beautiful hasti named Madhubala. Thank you very much. For a lot of people, Madhubala was actually the Madhushala. Yeah. Yes. Those days. Yes. Sir, may I speak? When I was young, that time I had read Rubaiyat of this Bachchan. And after so many years, very first time I heard this, and it was my really joy, and I was wanted to listen all these things. And today I got it. Thank you so much. Very good. Very good. राहुल जी, आपने बहुत नेकी का काम किया है. अरे पता नहीं, लेकिन मैं ही जानता हूँ कि मैंने कितना खराब गाया. नहीं, बहुत अच्छा था. नहीं, ऐसा है, जो भी हमारे यहाँ कई गाने वाले यहाँ पे हैं, वो जानते हैं कि इसको गाना आसान नहीं है, इसमें बहुत अभ्यास चाहिए. मैं वो अभ्यास नहीं कर सका. Naturally, you are not singer, but you could. भाव, उसके पीछे भावों की अभिव्यक्ति होती है. किस भाव से आपने अभिव्यक्त किया है, that matters a lot. Yeah, exactly. Divya ji, I would request you to say something also. Divya ji from UK. Divya Mathur runs a very important magazine as well as an organization, cultural and literary organization in UK. Divya Mathur. Divya ji, can you please? I don't know if she is here, but I can't see her. And Anup ji, are you there again still? Yes, I'm here. Divya ji is also here. Divya ji is here. Divya ji, great. So, Rahul ji, I just want to add one thing, that Manna Dey was a Bengali, but the way he has sung this beautifully, I mean, a perfect diction, I would say, absolutely. And Jaydev's music, of course, was, it's beautifully done, the whole thing. I'm sure you have hosted Manna Day also. No, I'm not that old. You have hosted so many cultural and literary celebrities from India in your home. I've had a pleasure of listening to Hemant Kumar
Okay. in person. Yeah, that's something. Would you add Madina, something, hello, would you add sir. something about Hello. Bachchanji and Madhushala, Anupji? Sorry. Would you add something, your own sort of comments on? No, I think you did a wonderful job, and so yeah, there is an interesting anecdote about people complained about Madhushala, that Bachchanji is promoting drinking alcohol and this and that. So there is an incident where the news reached Gandhiji, and Gandhiji was also a little upset, but then he invited Bachchanji, and then Bachchanji presented the Madhushala to him, and he recited Madhushala, and then Gandhiji said, "What's wrong in that?" I mean, he totally understood. So that's one. Anyone has any further questions for Rahulji? We have run short of time. So if anyone has any questions, please ask him now. No question. Thank you. It was very nice. So we'll end this session this evening. I think it was a very, very meaningful and meaningful evening. I'm sure everyone has enjoyed themselves. Yeah. Thank you. Although I'm not much of a Hindi, I don't understand that well, but I think Rahulji has explained everything so beautifully that, even a layman like me could understand. Thank you very much, Rahulji. And we hope to have such sessions from you from time to time, whenever you can give us the time. Well, because of Thank Malika, you who very is much. Thank you. a non-member, I want to thank Dignity Foundation for this great privilege and honor that they have afforded me. Thank you so much, Sushma. Thank you. Thank you.